Assalamu alaikum. Well, dear students, in our previous chapters, we have studied those life processes which help an organism to keep alive. Now, all organisms grow old with time and they ultimately die. In fact, every living organism that remains alive on this earth for a limited period of time and then dies. So, new organisms have to be produced in place of those who die. Thus, there is another process that takes place in living organisms, that is what is known as reproduction. So, today our topic is how do organisms reproduce, and it is third chapter of our bioscience. What is reproduction? Reproduction is the production of new organisms from the existing organisms of same species. Thus, जो organisms है, how do they reproduce, and what are different modes of reproduction in living organisms? In this chapter, we have to discuss this. Organisms they reproduce to continue the chain of life. ठीक है, and this is reproduction is essential for the survival of species on this earth, and this process is very important for the existence of life on this earth, and process of reproduction that ensures continuity of race, or we can say life on earth. And thus we can say जो reproduction है by human beings that ensures that human species will continue to exist on this earth for all the time to come. And this reproduction it gives rise to more organisms with same basic characteristics as their parents. Now, जो different organisms have, they reproduce in different ways. Let us have a detailed look at how different organisms reproduce. There are many different ways in which new organisms are produced from their parents. For example, amoeba that just splits into two parts to produce new amoeba, or we can say organisms like hydra and yeast, they grow out of their parents' body in form of bud, or we can say some organisms like birds and snakes, they hatch out the eggs to laid by their parents. And जो human beings है, या we can say जो dogs है, या we can say cats है, how they reproduce by sexual method. Now let us see what are two ways in which organisms reproduce. First is asexual reproduction, second is sexual reproduction. What's asexual reproduction? In this process only a single parent is involved and no gamete formation takes place in asexual reproduction. Thus we can say जो asexual reproduction है इसमें बस only single parent is involved, and इसमें जो है gamete formation नहीं होती है. इसमें only a single parent can give rise to offsprings. And asexual reproduction जो है इसमें जो है there is no involvement of reproductive cells, or we can say gametes. ठीक है, and we can say thus asexual reproduction is the production of new organisms from a single parent without the involvement of sex cells or gametes. ठीक है, and second is sexual reproduction. What is sexual reproduction? In this process two parents are involved and gamete formation takes place, and this thus sexual reproduction जो है इसमें जो है two parents involved होते हैं, और जो offspring है that arise from two parents of different sexes, male sex and female sex. The male parent that contains male sex cells or male gametes, and female parent that contains female sex cells or female gametes. Thus we can say sexual reproduction, it is the production of new organisms from two parents by making use of gametes. ठीक है, and in sexual reproduction the sex cell of one parent that fuse with sex cell of other parent to form a new cell which is known as zygote, and this zygote it later on develops
and grows and develops into a new organism. फॉर एग्जाम्पल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल ह्यूमंस की फ्रॉग कैट डॉग्स दे आल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड ऑफ reproduction. Thus we can say the basic difference जो है between sexual and asexual reproduction, it is that in asexual reproduction only one parent is involved, while in whereas in sexual reproduction two parents are involved. ठीक है. Now let us first discuss asexual reproduction. asexual reproduction जो asexual reproduction, it is of different types like fission है, budding है, vegetative propagation है, regeneration है, spore formation है. Let us have a look at these one by one. First let us discuss what is fission. What is fission? This process, it is a type of asexual reproduction and it takes place in unicellular organisms. इसमें क्या होता है फिशन में क्या होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वी कैन से जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया दे just split or we can say break into two identical halves during cell division that led to creation of new organisms. Thus we can see जो fission है it is a process of reproduction in unicellular organisms in which an organism splits or we can say divides to form two or more new organisms. And this fission it is further of two types, binary fission and multiple fission. What is binary fission? Binary fission is an asexual reproduction in which parent organism that splits or divides to form two new organisms. Understand? The organisms reproduce by binary fission. क्या होता है इसमें जो ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है दैट डिवाइड्स इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. when this happens जो parent organism है that ceases to exist and two new organisms come into existence. और जो ये parent organism है ये इसी की बॉडी जो है दैट स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो एमोबा की, पैरामीशियम की या लेशमेनिया है एक बैक्टीरिया दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. सेकेंड इज मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन क्या होता है इसमें जो है these an organism that splits or divides to form many new organisms at the same time. बाइनरी फिशन में ऑर्गेनिज्म सिर्फ स्प्लिट होता है टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में और जो ये मल्टीपल फिशन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है दैट स्प्लिट्स इनटू मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. और जो है इसमें क्या होता है मल्टीपल फिशन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल लाइक नो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड या मॉइस्चर या टेम्परेचर. जब एक ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशंस जो है फेवर करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस टू एन ऑर्गेनिज्म जो ये ऑर्गेनिज्म है इट फॉर्म्स ए सिस्ट अराउंड इटसेल्फ. इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड इटसेल्फ. और जो ये जब ये प्रोटेक्टिव वॉल प्रोड्यूस करता है और वी कैसे फॉर्म करता है अराउंड द सेल लाइक हम इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम की. इनसाइड द सिस्ट जो ये न्यूक्लियस होता है इस सेल का that splits or we can say divide several times to form many smaller nuclei that are known as daughter nuclei. And little bits of cytoplasm जो है that collects around each daughter nuclei and thin membranes are formed around them. ठीक है. This means जो ये new daughter cells जो होती है they are formed from a single parent cell within this cyst. ठीक है. एंड जो ये डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है दैट आर फॉर्मड अराउंड इनसाइड दैट सिस्ट एंड व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल अगेन जो ये सिस्ट है इट डिजॉल्व्स
और जो ये daughter nuclei है they are released from this cyst which later on develops into a new individual cell. एस इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं प्लाज्मोडियम की. जो प्लाज्मोडियम है व्हाट इज इट? इट इज ए प्रोटोजोआ or we can say it's a microscopic single celled animal which reproduced by this multiple fission. It has been found that around 1000 about 1000 daughter cells are produced by multiple fission of one plasmodium cell. Thus we can say जो ये plasmodium है when it undergoes a multiple fission from one plasmodium cell 1000 daughter cells are produced. And what is this plant? It is actually a malarial parasite which produces malaria disease in human beings. Second is budding. What is budding? It is also a method of asexual reproduction. In budding, a small part of the body of a parent organism that grows out as a bud which then detaches and becomes a new organism. बॉडी में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी पे एक आउटग्रो डेवलप होता है and this outgrowth then detaches and forms a new organism. The developed organism जो है that remains attached to the parent organism and detaches only when it matures, leaving behind scar tissues. And फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा में हम देख सकते हैं हाइड्रा जो है दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. ठीक है, हाइड्रा जो है ये सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और इसमें क्या है इट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग बाय यूजिंग इट्स रिजेनरेटिव सेल्स. इन हाइड्रा जो है स्मॉल आउटग्रोथ और वी कैन से बड दैट इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी by repeated mitotic division of its cells. The bud जो है that grows gradually to form a small hydra by developing a mouth and tentacles, and finally the tiny new hydra that detaches itself from the body of the parent hydra and lives as a separate organism. Thus we can say जो hydra है it is simple multicellular organism and it reproduces by budding, by forming or we can say by developing a outgrowth on its body which later on detaches from that body and develops into a new organism. And yeast जो है it is also a tiny unicellular non-green plant which is known as fungus. It also reproduces by this method of asexual reproduction that is known as budding. Third is vegetative propagation. What is vegetative propagation? In this method, a new plant that grows from the fragments of a parent plant or a specialized reproductive structure. The offsprings are the exact clones of the original plant and there is no mixing of DNA. The common forms of vegetative propagation are grafting, layering, cutting, tuber, टिश्यू कल्चर. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जो वेजिटेटिव इसमें जो है जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस हम करते हैं और हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट, लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फॉर एग्जांपल vegetative propagation जो है it usually involves the growth and development of one or more buds on the old part of the plant to form a new plant, and when favorable conditions are given to that part of plant this bud develops to form a new plant. Like for example हम देखते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन में हम देखते हैं जो ग्रीन ग्रास प्लांट्स है दे स्प्रिंग अप, दे ब्लो अप, दे फ्लोरिश अप इन द ड्राई फील्ड्स आफ्टर रेन्स. द फील्ड जो है उनमें होते हैं ड्राई स्टेम्स ऑफ ओल्ड ग्रास प्लांट्स and when by getting rainwater the buds present on dry grass plant stems they get activated to produce a new grass plant. ठीक है, thus we can say जो green grass है that grows into the fields after rains from the dry old stems of grass plants that are present in the field. जैसे हम अपने गार्डन्स में देखते हैं कि विंटर में जो होता है घास नहीं होता है लेकिन एज द स्प्रिंग सीजन केम दैट ग्रास अगेन ग्रोज
How it grows from the buds that are present on stems of old grass plants. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम की। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है दैट आल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो इसका लीफ होता है उसमें बड्स होते हैं प्रेजेंट, एंड व्हेन लीफ गेट्स covered with soil it grows into a new bryophyllum plant। या हम सिंपल एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, जो हम आलू घर में होते हैं हमें, हम कैसे उनको ग्रो करते हैं। जो ट्यूबर होता है वो होता है, जो आलू होता है ये असल में क्या होता है, ये होता है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ए प्लांट विच इज स्वेल ऑन विथ स्टोर्ड फूड। एंड जो ट्यूबर होता है इसमें होते हैं नंबर ऑफ बर्ड्स और वी कैन से आईज, और ईच बud or eye of the tuber that grows into a new plant when it is sown into soil। ठीक है, thus we can see जो potato tuber है that can be used for vegetative production of potato plants। ठीक है, नेक्स्ट इज रिजेनरेशन। व्हाट इज रिजेनरेशन? रिजेनरेशन में क्या होता है, ये होती है इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया who we have observed that they are cut into several pieces. In some organisms, plants as well as animals, some small cut parts of their body they can grow or regenerate to form whole new organism. The process of getting back a full organism from its body part that is known as regeneration. The simple organisms like Hydra and Planaria they show regeneration. How they reproduce in Hydra and Planaria जो उनकी body है that gets cut into number of pieces. How they reproduce, उनकी जो parent body है that gets cut or that breaks into a number of pieces, and each body piece then grows into a complete organism. For example, plain area क्या है, ये flat worm होता है किसमें, that is found in freshwater ponds and slow moving streams। एंड जो ये प्लेन एरिया है इसमें क्या होता है, इसमें होता है possess a greater power of regeneration, and when its body gets cut into small pieces, each cut piece of that grows into a complete new organism। ठीक है, दस जो रिजनरेशन है ऑफ जो ये है ऑर्गेनिजम्स है, इसमें क्या होता है, ये हाउ इट रिजनरेट्स फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इसके जो एक कट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जो इसकी में सेल्स होती है, दे कंटिन्यूअसली डिवाइड रैपिडली टू मेक ए बॉल ऑफ सेल्स। और जो सेल्स प्रेजेंट होती है इन दिस बॉल ऑफ सेल्स, they move to their proper place within this ball where they have to form various organs and body parts of the organisms। और जो cells है they change their shape or they become specialized to form different types of tissues, and these different types of tissues they form various organs and body parts of the organism। ठीक है, this is what is known as regeneration। And next is spore formation। What is spore formation? During spore formation, the organism forms a knob-like structure called sporangium। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग इन स्पोर फॉर्मेशन जो पेरेंट प्लांट है दैट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स विच आर नोन एज स्पोर्स। एंड जो स्पोर केस ऑफ द प्लांट है, when it bursts the spores separate into air, and when these airborne spores land on food or under favorable conditions like damp and warm conditions they germinate to produce a new plant like rhizopus bread mold। ठीक है, जो हम देखते हैं कि जो टाइनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड और फंगस प्लांट है, दे आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एयर। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल कीप ए मॉइस्ट ब्रेड in aside for a few days, we see जो spores of bread mold है which are present in air they settle on this moist bread and germinate to form a new fungus plant। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम रोटी रखेंगे बहुत दिनों के लिए घर में, हम देखते हैं कि उस पे जो है फंगस डेवलप होता है। ये फंगस कहाँ से आता है, असल में जो ये स्पोर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एयर, एंड व्हेन दे
find the favorable conditions like this moist bread, they settle on this moist bread and they germinate to form a new fungus plant. ठीक है, ये फंगस प्लांट क्या होता है? द ब्रेड मोल्ड प्लांट जो है, इट लुक्स लाइक ए वाइट कॉटनी मास दैट कवर्स द ब्रेड स्लाइड्स विच लेटर ऑन टर्न्स ब्लैक. ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ asexual reproduction. ठीक है, and thus these are different these are different types of asexual reproduction. Thus you remember कि जो reproduction है, what is reproduction? Process of forming new organisms from the existing organisms. और जो reproduction है, it is of two types, sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction is that type of reproduction in which two parents are involved, and asexual reproduction is that type of reproduction in which only single parent is involved. And we discuss different methods of asexual reproduction like fission, budding, vegetative propagation, regeneration, and spore formation. This is all about asexual reproduction. Thank you.